Yes, good afternoon. So today we will start with our next class that is about the 8051 timer programming. The topic is 8051 timer programming in assembly. So before moving to this, what is basically how to do the programming for the timers. Firstly, we should know what is basically the timer is. Uh, like uh, 8051 have two timers and you can say the counters. Okay, so they can be used either as timers or to generate any time delay or as an counter to count the event. Okay, like the events that are happening outside the microcontroller, जो भी इवेंट्स आपके माइक्रो कंट्रोलर के बाहर से हो रहे हैं, अगर हम उनको उन पर कुछ काउंटर ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हम उनको उनका टाइम वी वांट टू कैलकुलेट, इन दैट केसेस दिस 8051 programming will come into the picture. Okay. We are saying 8051 timer programming, so in this case 8051 has two timers, that is timer 0 and timer 1. तो आपके पास यहाँ पर टू टाइमर्स होंगे, दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1. व्हाई वी आर कंसीडरिंग टाइमर्स, लाइक अगर आपको कोई भी टाइम डिले क्या करना है, जनरेट करना है. ओके, या फिर आपको कुछ भी कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक कितने क्लॉक पल्सेस आ रही हैं या फिर कितने टाइम वो इवेंट हो रहा है, अगर हम उस इवेंट को काउंट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज दीज टू थिंग्स, like either counter or you have to use the timers so as to like to produce the time delay or either to count the events, then the counter will be used. So 8051 के अंदर आपके पास टू टाइमर्स होंगे, दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1. दोनों ही टाइमर आपके पास 16 बिट के रहते हैं, लाइक टाइमर 0 इज ऑल्सो ऑफ 16 बिट एंड टाइमर 1 विल ऑल्सो बी ऑफ 16 बिट. दोनों टाइमर्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक द हायर बिट्स एंड द लोअर बिट्स. ओके, like you can say timer 0 is divided into two parts, that is the lower part, timer lower part, and the timer higher part, that is further written as timer 0 है, that is by TL0 and TH0. Timer 1 again divided into two parts, that is TL1 and the TH1. So this is how these timer registers are being divided. Like if we discuss about the timer 0 register, like if we discuss about timer 0 register, so the like this register, इसको भी अगर आपको असेस करना है, देन यू कैन सिंपली असेस इट, लाइक अगर जैसे आप ए रजिस्टर को यूज करते हैं, आप बी रजिस्टर को यूज करते हैं, R0 रजिस्टर, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर अप टू R7, जैसे उन रजिस्टर्स को यूज किया जाता है, सिमिलरली दिस रजिस्टर्स आर यूज्ड, दैट इज टाइमर रजिस्टर को यूज किया जाता है. ओके, लाइक आपके पास ए बी R0 R1 दे ऑल आर 8 बिट रजिस्टर्स, दे ऑल आर 8 बिट रजिस्टर, लेकिन टाइमर 0 आपके पास कितने का है, 16 बिट रजिस्टर है. तो अगर आपको इसके 16 बिट्स को यूज करना है, तो आप लाइक हम इसको क्या करें, टू पार्ट्स में डिवाइड करें, TL0 TH0, तो आप 8 बिट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. लाइक अगर आपको इसमें लाइक TL0 में आपको कुछ डेटा मूव कराना है, देन हाउ यू कैन यूज इट, लाइक मूव TL0 #4FH. सिमिलरली अगर आपको TH0 के अंदर कुछ मूव कराना है, देन यू कैन यूज इट लाइक मूव टू विच TH0 एनीथिंग 39H.
So this is how these timer zero this timer zero register can be used as a normal register like the A register, B register, R0 register, R1 register, R2 register, sort of that. Okay. So we are saying this timer zero is a 16-bit register. Then how we can draw this register? This is this part will show you the TL0 part, and this is TH0. This is TL0. This is TH0. Okay. So TL0 will have 8 bits, that is from D0 to D7, and TH0 is D8 to D15 higher bits. So it can be written as like a D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. And similarly, this higher bits will be like from D8, D9, D10, 11, 12, 13, 14, and 15. So this is how we can represent the timer zero register. In the same way, you can represent the timer one register also. That is also timer one register, that is again of 16 bit. That is again of 16 bit and will consist of D0 to D15 bits as in the case of the timer zero register. Okay. So these are two registers. लेकिन अब इन रजिस्टर्स को जो हमारे पास टाइमर जीरो है या फिर टाइमर वन है इनको असेस करने के लिए हमारे पास एक और रजिस्टर रहता है, दैट इज द टी मोड रजिस्टर. उस टी मोड रजिस्टर के वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसकी बिट वैल्यू के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड लाइक विच टाइमर विल वर्क. टाइमर जीरो ऑपरेट करेगा या फिर टाइमर वन वर्क करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द timer mode. That will depend upon the other register, that is the T mode register. इस T mode register की वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि टाइमर जीरो रजिस्टर वर्क करेगा या फिर टाइमर वन रजिस्टर वर्क करेगा. सो T mode register, that is the timer mode register. T mode is the T for the timer and MOD is for the mode. Timer mode register. Okay. तो हमारे पास लाइक टाइमर जीरो है या फिर टाइमर वन है, दोनों ही रजिस्टर्स आपके पास टी मोड रजिस्टर को क्या करते हैं, यूज करते हैं. टाइमर जीरो भी टी मोड रजिस्टर को यूज करता है, टाइमर वन भी टी मोड रजिस्टर को क्या करता है, यूज करता है, ताकि डिफरेंट मोड्स को क्या किया जा सके, सिलेक्ट किया जा सके. क्योंकि हमारे पास टाइमर डिफरेंट मोड्स में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं. वो मोड्स क्या होते हैं, वी विल सी. But before that, we will just consider the bits of this T mode register. T mode register आपके पास 8 बिट का रजिस्टर रहता है. लाइक आपके पास टाइमर जीरो टाइमर वन ये 16 बिट के थे, बट टी मोड रजिस्टर ये आपके पास रहेगा 8 बिट का रजिस्टर. 8 बिट का रजिस्टर में जो आपके पास 4 बिट्स होंगी दैट विल बी फॉर टाइमर जीरो, और बाकी की जो 4 बिट्स होंगी दैट विल बी फॉर टाइमर वन. ओके. So how we can draw the structure of the T mode will be, that is 8 bit है आपके पास, like 4 bits and 4 bits. ये 4 bits होंगी आपके पास like ये 4 bits होंगी for timer जीरो, और ये 4 bits होंगी आपके पास for timer वन. टाइमर जीरो की 4 बिट होगी और ये होगी आपके पास टाइमर वन की 4 बिट. ये आपको क्या डिफाइन करती है, दैट इज
इसकी 4 बिट्स क्या हैं, दैट इज M0, M1, C/T एंड गेट। M0, M1, C/T एंड गेट, यही सेम बिट्स आपके पास रिपीट होंगी फॉर द टाइमर 1, दैट इज M0, M1, C/T एंड गेट। ये M0, M1 गेट टाइमर 0 के लिए है, ये जो M0, M1 होगा वो टाइमर 1 के लिए होगा। सो इट विल बी M0, M1, C/T एंड गेट। तो ये M0, M1 बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दी मोड बिट 0, मोड बिट 0, दिस इज मोड बिट 1। M0 is representing mode bit 0, M1 is representing mode bit 1. Similarly, here M0 is representing mode bit 0, M1 is representing mode bit 1. Okay. And this C/T is whether you want to use the bits as a timer or a counter. Okay. So depending upon the value of this bit, it will be decided whether it will act as a act in a timer mode or in a counter mode. Okay. So by using this bit, that is this D2 bit of the T mode register. ये T mode है आपके पास, T mode की D0, D1, D2 बिट है ये। T mode की जो D2 बिट है, that will decide timer or whether timer is selected or counter will be selected. Like if the value for this is 0 cleared, then that will act as for the timer operation, that will take the input from the internal system clock. Okay. And अगर इसकी वैल्यू सेट रहती है, 1 रहती है, then it will act for the counter operation. अगर इसकी वैल्यू रही 0 cleared, it will be C/T क्या रहेगा, cleared for timer operation, and it will be set for counter operation. So that is why hyphen is shown over here. Like it can act this depending upon this bit, it will act as either counter or timer depending upon the value whatsoever the value is this bit is having. Like if it is having cleared, then it will act as a timer operation. If it is set, then it will go for the counter operation. Okay. But these 4 bits are for the timer 0, and similarly these 4 bits are for the timer 1. Okay. Similarly, this is the gate control. So in this case, the either like timer or counter is enabled only and only when the interrupt pin is high, or the you can say the timer control pin is set. When it is cleared, then the timer is cleared and the TRX control bit is set. Okay. We will see further what is basically the use of these two pins M0 and M1. ये दो पिंस आपके पास ऑपरेटिंग मोड बताएंगे टाइमर का। अब आपके पास ये 2 बिट हैं, इन 2 बिट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 0 0 हो सकती है, या 0 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है, या फिर 1 1 हो सकती है। 2 बिट्स मीन्स 4 combinations, that is 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो आपके पास टी मोड के अंदर यहाँ पर इन दोनों बिट्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो हमें देखना है कि अगर इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, तो आपके पास जो टाइमर है वो कितने बिट पे ऑपरेट करेगा। वो अभी हम देखते हैं कि बेसिकली 13 बिट होता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, 16 बिट क्या मीनिंग क्या होगा, दैट वी विल सी फर्दर।
But the thing is, यहाँ पर firstly we will check out whether it will be 00, 01, 10 and 11. Okay. So this is about the today's class, that is the 8051 timer programming, that is having two types of timer depending upon the bits, how the values get transferred and how the team or structure will work out.